dear students, myself Gangadhar Solanke, and I welcome you all to the MCGM's virtual classroom. We are now going to talk about energy resources one by one in detail. So on the screen, first type of substance based energy resources, and that is wood, very common. और गांव में अगर हम जाएंगे तो बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलता है, जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग. In villages, wood is used on a large scale for cooking on earthen stoves. अगर आप मुंबई छोड़ के गांव में जाएंगे तो बहुत सी जगहों पर, बहुत से घरों में हमें आज भी ये दिखाई देता है, वुड का यूज किया जाता है as a energy resource. Humans have been using wood as an energy source for thousands of years. If we talk about kerosene, if we talk about LPG और if we talk about oven, तो ये सारी चीज़ें अभी अभी आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, या फिर बहुत प्रोग्रेस के बाद ये सारी इंसान के हाथ लगी है. बट बेसिकली इट वाज स्टार्टेड विद वुड. वुड के साथ ही स्टार्ट हुआ. People living in developing countries use half of the world's wood supply as their primary source of fuel, which has led to deforestation in many areas. Now, this one is also the back thing about using wood as fuel. In industrialized countries, trees are cut down for lumber and paper production rather than fuel. Next one, coal. Long ago, plant and animal remains got buried due to earth movements. Long ago, plant and animal remains got buried. जैसे डेथ होने के बाद जो भी कुछ बचता था वो क्या हो जाता था, जमीन में ही रह जाता था. They were then decomposed due to pressure and heat. जो इंटीरियर में हीट है अर्थ के और जो लेयर्स का प्रेशर है एक दूसरे पे, they were then decomposed. उसकी वजह से क्या होते थे, decomposed होते थे because of pressure and heat, leaving behind the element carbon. That is how coal was formed. Now here you can see remains of plants, then remains of animals. ये सारे इसमें दब जाएंगे टाइम के साथ साथ, और जो अर्थ का प्रेशर है एंड हीट, सारा मिलके इससे बनता था कार्बन. एंड दैट इज हाउ कोल वाज फॉर्म्ड. और फिर इसका यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी. Coal is used for different purposes according to its quality. Low quality coal is used for cooking and coke, and high quality coal is used in industries as also in thermal power stations. Non-renewable energy resource. The most abundant fossil fuel in the world is coal. Coal is a rock that contains at least 50% plant remains. Coal begins to form when plants die in a swampy area. The material eventually will become coal after millions of years. So things which play very important role in the making of coal: time, then the heat in the interior of the earth, एंड द प्रेशर. ये सारी चीज़ें काम करती है और हमें कोल मिल जाता है. नेक्स्ट वन, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. लाइक कोल, these were also produced due to earth movements. Mineral oil is found under land surface and also below the ocean floor. कहाँ मिलता है, लैंड सरफेस पे भी और ओशन फ्लोर में भी. इट्स अ फॉसिल फ्यूल. सो व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? पेट्रोलियम, रॉक ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ब्लैक गोल्ड, कोल ऑयल,
अनरिफाइंड पेट्रोलियम, रॉक ऑयल, ये सारे वर्ड्स हम उसके लिए यूज कर सकते हैं. इन मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑयल वेल्स, reserves of natural gas are also found. तो जब मिनरल ऑयल को ढूंढा जाता है तो इसके भी रिजर्व्स मिलते हैं नेचुरल गैस के. मिनरल ऑयल रिजर्व्स आर लिमिटेड इन नेचर. This oil is in great demand and hence its cost is very high. It is called black gold. क्या कहा जाता है इसे? ब्लैक गोल्ड. क्योंकि एक तो वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है. These energy resources are used in thermal power generations. To understand this, we have figure 9.14, where in this figure there is distribution of mineral oil and coal fields in India. For that, here we have index. ये कोल फील्ड है, ये मिनरल ऑयल फील्ड है, और नीचे जो दिख रहा है वो गोदावरी रिवर बेसिन है, दिस वन. Now here this one is coal field here, and if we go for mineral oil field, then here you can see here also Mumbai high. And the questions: name the states which have coal fields. This question is for you. You people have to observe the map and then find out the answers. Name the mineral oil field in the Arabian Sea. Here is the Arabian Sea. तो आपको ढूंढने में easy होगा. Name two states which have coal fields on a large scale. Then which mineral oil fields are located in northeast India? The reserves of which mineral are found in the Godavari basin? So here is the Godavari basin. Which of the states have mineral reserves in the Godavari basin? So for this you have to observe the figure, अच्छे से देखना है, और जो questions दिए हैं उसके answers आपको ढूंढने हैं. You have to find out the answers. Now next one, biogas. Biogas can be generated from biotic waste. Biotic waste materials such as faces of animals and dead leaves, cells, etc. इन सारी चीज़ों से बायोगैस बनता है. This energy can be used for domestic needs such as cooking, heating water, lighting lamps, etc. Some farmers have raised biogas plants in their own yards to cater to their domestic needs. अभी भी मैंने देखा है, आई डोंट नो आपने ये देखा है कि नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले बहुत से गाँव में बहुत सारे फार्मर जो थे उन्होंने अपने अपने एरिया में ये बायोगैस प्लांट बनाए थे और फिर उस एनर्जी से वो अपना बहुत सारे काम चलाते थे, क्योंकि जो बायोटिक वेस्ट है उन्हें इजीली मिल जाता था बिकॉज ऑफ द एनिमल्स जो फार्मर्स के पास होते ही है. ये इस तरीके से होता है बायोगैस प्लांट. Next one, energy from waste material. Waste is generated daily on a large scale in big metropolitan cities, and the best example of this is the Mumbai city where we people are living. हमें पता है कि दिन में कितना कचरा या कितना अलग अलग तरह का वेस्ट यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बनता है, और फिर हम उसे वो गीला कचरा अलग से, फिर सूखा कचरा अलग से, ऐसा कर करके जमा करके वो देते हैं. सो वेस्ट इज जनरेटेड डेली ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज. तो इसके साथ क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजल इज अ मेजर प्रॉब्लम. वेस्ट डिस्पोजल इज अ मेजर
प्रॉब्लम इन सच प्लेसेस, क्योंकि इतना बड़ा वेस्ट है, इतना ज़्यादा वेस्ट है, और उसको रोज के रोज कहाँ मैनेज करेंगे या फिर कहाँ डिस्पोज करेंगे. दिस वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड, उसको अलग किया जा सकता है, टू यूज द बायोटिक कंपोनेंट टू जनरेट gas. Just now we people talked about biogas, in which biotic components are used. बायोटिक वेस्ट का यूज होता है, तो इस कचरे में से भी अगर बायोटिक वेस्ट को अलग किया गया, सेग्रेटेड किया गया, तो शायद उसका यूज हो सकता है. सो दिस गैस कैन देन बी यूज्ड टू जनरेट पावर in future. This may help to solve the problem of waste disposal in cities. Because of this क्या होगा, वेस्ट डिस्पोजल जो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इतना सारा वेस्ट का टेंशन जो है अलग अलग करने का, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. तो वो एक चीज है. देन here you can observe this figure. आप फिगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है वेस्ट, देन रिकवरी, हीट, फ्यूल एंड पावर. Now our next point, energy from waste material, figure 9.16, which is given in our textbook. A plant for the generation of energy from waste. The above energy resources are known as biofuels because they originate from the remains of dead plants and animals. क्यों बायोफ्यूल्स कहा जाता है? क्योंकि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है उनके रिमेन से ये बनते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, एटॉमिक एनर्जी. Splitting of the atoms of minerals like uranium and thorium can be used for power generation. Splitting of the atoms, उनको split किया जाता है प्रोसेस में, और यूरेनियम और थोरियम का उसमें यूज होता है. सो स्प्लिटिंग ऑफ द एटम्स ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, जिससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है. इन दिस प्रोसेस यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, एनर्जी कैन बी जनरेटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. सो यूज ऑफ मिनरल्स इज लेस, उनका यूज कम करना पड़ता है, बट वी आर गेटिंग एनर्जी ऑन लार्ज स्केल. Only a few countries in the world like India, USA, Russia, France, Japan use atomic energy. सभी देश जो है एटॉमिक एनर्जी का यूज नहीं करते. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द फिगर about the formation of atomic energy. Here it is the figure. Control rods, then steel pressure vessel, pump, steam generator, ये कंक्रीट कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है. देन स्टीम लाइन, ये यहाँ पर एक पंप है. फिर है टरबाइन एंड जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. देन कंडेंसर कूलिंग वाटर, द कूलिंग टावर emits clouds of water vapor. This is a pressurized water reactor, which is a common type of light water reactor. So we people learned about atomic energy, energy from waste material, biogas, and now we're going to talk about process based energy resources. In that, the first one is Hydel power. Hydel power is the power. Hydel power is the power obtained from the kinetic energy. किससे मिल रही है?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है. Hydel power does not cause any degradation of the environment. Also, the water used in generating power can still be used again. इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जिस वाटर का यूज हो रहा है उसको फिर से यूज भी किया जा सकता है. भाखरा नांगल in the Punjab and Koina in Maharashtra are examples of this Hydel power. Now on the screen again we have image to understand. Water, then turbine, ये यहाँ पर एक जनरेटर है, वाटर फ्लो रोटेट्स शाफ्ट, ये रिजर्वर है, देन डैम, वॉल हाउस, सर्च टैंक, पेन स्टॉक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. Some important hydel power stations in India are Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagar, John Sagar and Damodar Valley projects in Tehri Dam, and in Maharashtra, Koina. Next one, wind energy. Man has been using this resource since hundreds of years. If we talk about example, then we have sailboats जो हवा से आगे 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 चलती जाती है. But nowadays wind energy is being utilized for power generation. For power generation, a wind speed of 40 to 50 किलोमीटर पर आवर इज रिक्वायर्ड. अगर विंड से पावर जनरेट करनी है तो विंड की स्पीड कितनी चाहिए? 40 to 50 किलोमीटर पर आवर. ड्यू टू दिस विंड स्पीड द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स टर्न. उस स्पीड से क्या होगा, ये जो फैन है वो क्या करेंगे, घूमना स्टार्ट करेंगे. Due to this wind speed, the blades of the windmills turn, generating kinetic energy, and this kinetic energy is further converted into the electricity. Now in this, on the screen you can see figure. Next one, very common, solar energy. We get light and heat from the sun. We have seen that the intensity of solar energy is the maximum in the torrid zone. In a country like India, which is in the torrid zone, there is a lot of scope for using this energy. And nowadays we know the temperature. अभी का temperature अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है. There is a solar power plant at Sakri in Dhule district of Maharashtra. Devices like cookers, lamps, heaters, vehicles can be run on solar power. On the screen you can see this. The generation of solar power depends on the intensity of sun rays and the ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन. अगर ठंडी होगी और सनशाइन उतना नहीं है तो शायद पावर कम मिलेगी, लेकिन समर में तो बहुत ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी. Now next, tidal energy. Sea waves and tides. Sea waves and tides are movements of ocean water that go on continuously. A technology has now been developed to generate power with the help of the speed and force of waves. On the screen you can see tidal basin. ये टरबाइन है जो उसे घुमाने का काम करता है. Here too electricity is obtained from kinetic energy because of movement. This energy is pollution free and everlasting. It can be used on a large scale in peninsular country like India. So efforts are on to start such projects in India. इंडिया में अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन, geothermal energy.
hot water springs have always been an object of curiosity for man. बहुत जगह पर है ये. They can be seen at उनाबदेव वज्रेश्वरी जो मुंबई के नज़दीक है, मणिकरण, इन जगहों पे ये हॉट वाटर के स्प्रिंग्स मिलते हैं. और वो एक क्यूरियोसिटी है, उसके पीछे क्या साइंस है उसके बारे में हमेशा चर्चाएं होती है, साइंटिस्ट देखते हैं. द टेम्परेचर इन द अर्थ्स इंटीरियर increases by 1 degree Celsius at a depth of every 32 meters. जितना नीचे जाएंगे 32 meters उतना 1 degree से बढ़ेगा. Man has now developed a process whereby this underground heat can be utilized to generate power. इसका भी यूज किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए. One such project is located at Manikaran in Himachal Pradesh state. So all the above energy resources are abiotic. They cause minimum pollution. They are also known as inexhaustible energy resources, क्योंकि उनको पूरी तरह से हम ख़त्म नहीं कर सकते. वो नेचुरली अवेलेबल है और उतना यूज़ हम करेंगे उतने ही वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं. मतलब यूज़ करने से ख़त्म होने वाले नहीं है. But one thing which we have to keep in mind about all these resources, that energy resources must be used very carefully because we need it. वो हमारी ज़रूरत है. And the population of the world is increasing continuously. दुनिया का जो population है वो continuously बढ़ता जा रहा है और हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है that is also increasing on large scale. If you only talk about the petrol or diesel, कितनी गाड़ियाँ हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. Or we can say this about electricity also. Nowadays our life is totally dependent on electricity. All the gadgets and the things we are using are directly or indirectly dependent on electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी पे इतने गैजेट्स है तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी भी बननी चाहिए और उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए जो रिसोर्सेस है दैट आर लिमिटेड. सो द थिंग इज एनर्जी रिसोर्सेस मस्ट बी यूज्ड वेरी केयरफुली. अगर हमें यूज़ नहीं है उसका तो हमें उसे बंद करके रखना चाहिए. The demand for energy is increasing all the time due to growing population, urbanization and growing needs of man. Our needs are growing and our life is continuously touching with the technology, or we can say that each and every area of our daily routine is directly or indirectly connecting with the technology. And for technology we need electricity or any kind of energy. So it is necessary to use alternative and non-conventional energy resources to meet these needs. It is also necessary to use energy very carefully, and we must always avoid unnecessary use of electricity. If we don't need तो हमें उसके बटन जो है वो बंद करके रखने चाहिए. It is easily possible for us to do so for better tomorrow, and not only for better tomorrow but for better today also. It is very important to use energy resources very carefully. Now in our today's topic, energy resources, we people learnt about the energy resources among natural resources, then how to use energy resources judiciously, information about energy resources in India, and the main thing, characteristics of substance based energy resources, process based energy resources, and please subscribe the channel and press bell icon to get notifications. So my dear students, this is all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.